Good morning to each and everyone. Welcome you to my YouTube channel, Dr.P.C.Jha.Thanks. It is motivation time. Every day I don't actually get the time with a view to just actually talk to you something. Or maybe the video to be just made a specifically, you can see. Today I have got two of the I think topic to be discussed with you or to be just talking about, you can say. Number one is, who am I? Somebody asked me a question there in the park yesterday. I just became compelled to just think it over. And the person who just asked me this question, maybe his intention was what I can't say pursue. By profession, he was, I think, civil engineer. Mr. Shahani, full name I forgot like that. But let me tell you, can a person tell it? Who is he? What about his mission? What about his identification? What about his target? What about his mindset? What about his identity? Let me tell you about myself. When I think from where should I begin? Let me begin particularly from the very area I hail from. I hail from a particular small village known as Igdara, close to Vikramshila University in the district of Baikalpur. There I was born, out of the womb of my mother Savitri Devi Jha, my father's Harishchandra Jha, my just grandson Bipra Mohan Jha, like that. This is the biological description like that. But basically when we simply think it over that, who am I? Who am I? A person. Who am I by name Prakash Chandra Jha? Who am I by nativity? Just a person belonging to Bihar. And who am I by just a concept over that identity, one of the citizen of India? It's not sure. Despite all the things, person knows you by profession. Person knows you by, you can say to her that your identity. Person knows you by, you can say to her that your behavior, whatsoever things are there. In most of the cases, this happens to be so. Now the question here is that the person who asks the question, what for? Question here is that they simply want to know your status. Question here is that they simply want to know your intention. Question here is that they want to just know your attitude. Another question here is that nearly every day want to know about you. How many persons you are likely to just give the very just clarification about yourself. So let me tell you, just you can say about that, life begins itself. At different juncture, you can say about that, sometimes it punctures, sometimes it fractures, sometimes it is really supposed to be making some sort of a structure. My motto here is to just make myself to be really supposed to be spread as much as I can. Just you can say expansion, as you can say about that. Nation actually just confined to certain area. That nation actually cannot be said the nation particularly of expansion, you can say about that glorification, unless the nation actually spreads far, far beyond the limitation, or you can say beyond the sky like that. In that case, you can see here. There's a matter of when the person is there. Certainly, just when the race is there, when the sex is there, you say male and female. When you can say about that nativity is there, you belong to certain area, about the area you're attached with. Sometimes you talk about your father, sometimes you talk about your mother, sometimes you talk about your sister. There's a matter of fact, a particular person has got different type of aspect. His brother, he's sometimes maternal uncle, sometimes you can say it about that, his grandson, sometimes you can say it about the student, sometimes he's a teacher, sometimes you can say it about that, he's really supposed to be a particular man just belonging to a nation and being a citizen, you can say it. They can't you say it about that, why do you actually confine to a certain nation? Why don't you make you to be international? So far as myself is concerned, let me tell you something, by profession, what I do. My hobby is to write poetry. I write Hindi, English poetry. Not to speak of that, I make the translation particularly of the world poets as a whole. You can actually know about me on my page. That is Rachna by Prakash Chandra Jha, or you can say it over that on my timeline. That is Prakash Chandra Jha on my YouTube. You can come here. That is really supposed to be Dr. Prakash Chandra. This is YouTube. And you can ask me, what are the things you do? I do many things. With the student, I become a student. With the student, I simply just make sanitation, and actually, after certain area, I just actually, you can say that make to be really supposed to clean. And this is what is there, you can say, everybody should be like that, you can see. But in most of the cases, person actually gives free of cost suggestion. You do this thing and that thing like that. Would you like to just actually follow the suggestions of almost all the person? What about the fashion right now? The person simply want to exploit you, simply just want to make your emotion to be really supposed to be started, and after that you are actually fired, not to speak of that person actually just actually make you to be really supposed to be somewhat died for the sake of the very cursed person as a whole, you can see.
But I simply want to say it about that whatever thing you do, somebody is there. Maybe hidden force, somebody is there, maybe just open force that makes you to be guided according to the very guideline you do the thing. So far as myself is concerned, I never thought it about that after retirement I will come to Delhi and just go to a park, and after that park will attract me and I just magnet me and I will start sanitation on the park. But whatever things is there, in 1 year, many experience I got. Nearly thousands of person I met. Their opinion I took. Their just happiness, their sorrowfulness, actually just shared, you can see. This is how you can say it about that. One thing I simply found it about that. The person tell it about that. Dil is of Dilwala, but I not a single person I got like that. What is the reason behind? I can't say. Maybe a kind of fear psychosis. Maybe a kind of being a stranger. Maybe a kind of thing person simply doubt other person like that. Now the person simply just doubt other person, certainly what type of thing will come. So far as myself is concerned, for the last 40 years I am in the profession of teaching. Nearly lakhs and lakhs of students I have taught. Most of them are actually just at high level post, you can see here, and I cannot see it about that I can reach there particularly in this life, you can say. Despite all the thing, I simply find what I'm everything. I'm lawyer. I'm almost all the professional through my student, you can see. But I earn the respect wherever I served. You can simply just throw a stone and the stone is falling by the side of any person, whosoever person he or she is here. You ask about me, they will simply tell. Not the dark side, but bright side. Ignore, sir. This is what I am. Ignore, sir. When I tell, it becomes the very just irony of somewhat pride. Somebody can say about that Ghamandi and whatsoever say what things are there, you can see. But that is not like the likely thing. But you must tell what you want to tell. If you curtail it, it will tell the different type of tale. And different type of tale simply derail a person. And not to make the person to be derailed, but you sell the person to the certain destination. My modus operandi here is that help the person, whosoever person he is, belonging to any nation, if you can do. If I make the translation of the person I don't know, I don't charge even a single paise. If I teach the student, even then I do not actually charge a single paise. This is my mission. You can ask me what for you are doing the thing. Only because of the reason, the thing I can do on my part. Without service, just because I do, without just even taking a single paisa. This I do. Ignorance here. I simply want my mind and my heart to be really supposed to be rectified so that other persons should not be actually just getting some sort of horrified like that. Ignorance here. Let this be open, you can see. Now the question here is that when you come here, certainly many persons you come across. If this becomes your path, you are introvert, you are confined to you are extrovert, you are actually just meeting with many person. As a matter of fact, by profession being teacher, I simply become a person that just lives in the life, or you can say it over that all the times I had to just remain under the CCTV camera, not of the machine, but the very original CCTV camera. This is the eyes of the very people as a whole. Wherever you go, they are looking at you. Not because of the reason that you are Mr. Prakash Chandra, but because of the reason you are by profession, you are a teacher. Teacher is all the time just put within the very camera of the eye. They simply want to know how do you talk. They simply want to know it about that, what about your opinion. They simply want to see it about that, what about your modus operandi to move like that. So my dear friend, in the market, maybe some of your student is there telling good morning, almost all the attentions are directed towards you because of the reason they wanted to know who is. What for he actually just told good morning. Basically teachers or maybe the persons, maybe doctor and other person, they actually, you can say it about that, if they are like that, certainly they are addressed like so, can see. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या आप चाहोगे अपने बर्ताव से वैसे लोगों को आप कह सकते हो दिशा बदलने के लिए? क्या ये सही है? नहीं. कभी कभी हमारे स्टूडेंट फेसबुक पे बोलते हैं आज मैं यहाँ पर हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ मी. लेकिन मैं सोचता हूँ कभी मेरे भी टीचर थे, उन्होंने भी मुझे कुछ कहा और मैं जो भी हूँ उनके भी जैसे हूँ. अब यहाँ पे छोटी सी बात मैं लेता हूँ. अभी मैं प्रमोद आचार्य जी की भाषण सुन के आया और वो मुझे अच्छा लगा. किसी ने मेरे से पूछा कि सर आप उनके बारे में क्या बोलेंगे. तो मैंने वही कहा कि भाई दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे अब्राहम लिंकन हो, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हो या आपका जावेद अख्तर हो, ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो आज के स्टार हैं. वो कल स्टार नहीं थे, बल्कि कह सकते हैं कि एक डूबता हुआ सितारा थे, और कह सकते हैं भूखे रहने के बाद
वह आदमी आज जहाँ पर भी है वैसे ढेर सारे लोग हैं, और आउट ऑफ डिफिकल्टी इमिनेट्स पर्सनालिटी। 2 रुपये लेकर के देवानंद भी मुंबई में घूमता रहता था, या दूसरे भी जो लोग हैं आज जिसको कह सकते हैं महानायक कहते हैं, उनकी भी स्थिति वही थी। आप कह सकते हो कि नेवी का जॉब 400 रुपये का महीना, फिर उसको छोड़ना, फिर वहाँ जाके स्ट्रगल करना, आज स्ट्रगल करके एक अपने मुकाम को बना रखा है। तो दुनिया के जितने भी लोगों की स्टोरी के पीछे कुछ न कुछ वरी है, कुछ न कुछ स्ट्रगल है, और स्ट्रगल ऐसा है जो कि कह सकते हो कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो अनेकों पड़े हैं। तो मेरे मित्र, अगर चाहते हो कि आप उस जैसा बनना चाहते हो और कुछ लाइफ लेना चाहते हो, तो बड़े लोगों की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ो, है ना। पढ़ोगे और उसके बाद हम नहीं कह रहे कि आप उसकी कॉपी करो, आप अपने आप को अपना ओरिजिनल बनाओ। आप तेंदुलकर बनना चाहते हो, तेंदुलकर क्यों, आप जो हो वही बनो। आप बनना चाहते हो मिस्टर मोदी, आप वही बनो जो आप हो, है ना। किसी को कॉपी करके आप नहीं बन सकते। कॉपी करोगे तो आप कॉपी कैट बनोगे, है ना। और मैं चाहता हूं कि आप कॉपी कैट नहीं बनो, आप बिग कैट बनो और ओन कैट बनो, और यह तभी होगा जब आप उस दृष्टिकोण से सोचोगे। अब एग्जाम्पल ले दो। ये अगर एक कहावत है, सेल्फ प्रेज इज नॉट रिकमेंडेशन। मैंने 4 स्कूल में काम किए, 4 क्या पहले भी मैंने किया था, लेकिन जो सर्विस में आने के बाद चारों बिगड़े स्कूल थे, और चारों को ट्रैक पे लाने में मैंने बरसक कोशिश की, और आ भी गया। और आज जो बच्चे जैसे भी थे आज अच्छे हैं। उनकी भाषा से, उनकी बोली से, उनकी लिखावट से जो मैं फेसबुक पे देखता हूँ, मुझे फक्र होता है कि आई एम द प्राउड, फक्र होता है कि मैं वैसे बच्चों को कहीं न कहीं थोड़ी सी हमने कोऑपरेट किया। और मैं वही जो मैं बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने की। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि वह कोई भी फॉलो करेगा। आप किसी को काम करने के लिए बोलते हो, आप आगे बढ़ो, निश्चित चैरिटी बिगिन्स एट होम। सर्टेनली वो लोग फॉलो करेगा, 1 दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, 3 दिन नहीं करेगा, लेकिन करेगा, है ना। मैंने कभी नहीं बच्चे बताया कि हमारे 2 ही बच्चे में। मुझे जब भी लोगों ने पूछा कितने बच्चे, तो मैं 3000 बोलता था, इसलिए कि वहाँ भी स्कूल में 3000 बच्चे थे। वो भी टीचर कम बोलते हैं, आलू वाले ज़्यादा बोलते हैं, है ना। तो खैर यहाँ की बात तो हो गई। अब रही बात, हर लोगों की लाइफ में मीठी कड़वी सब तरह का अनुभव होता है, और वह अनुभव लेकर के ही चलता है। कभी पास्ट में जाते हैं, कभी प्रेजेंट में जाते हैं। तो तत्काल जो हमारा अनुभव है, वो अनुभव बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। लोग मिलते हैं, लोग एक जैसे भी नहीं हैं, और वैसे भी हैं लोग जो भेड़ की तरह हैं। एक ने कह दिया सब उसी तरह कर लिए। एक ने क्या काला कपड़ा पहन लो, सब काला कपड़ा पहन लिया। एक ने कहा नीला कपड़ा पहन लो, सब नीला कपड़ा। अरे उसको पहनने के बच्चे औचित्य सोचो ना। जो अगर आपने यूनिफॉर्म पहने तो उसको कोई सेंटिटी होती है, उसकी कोई प्योरिटी होती है, उसकी कोई आइडेंटिटी होती है, उसके हिसाब से चलो ना। नीला का मतलब होता है नीला आसमान। आसमान तो ऊपर में नीला देख करके लोगों को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता। अब भी नीले की तरह, नील गगन की तरह बनो ना, शायद मुश्किल काम है ना। अब मैं थोड़ा सा बता दूं मैं क्या करता हूँ, खास करके वैसे सज्जन के लिए जिन्होंने मेरे से पूछा था आप क्या हो। तो प्रोफेशनली आई एम टीचर, रिटायर्ड प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, होम्योपैथी डॉक्टर, सोशल सर्वेंट, यूट्यूबर, पोइट, बाइलिंगुअल, और एक इससे सबसे ज़्यादा अगर कुछ है, एक विडो मदर का बेटा। आज मदर 80 साल के हैं की हो गई है, लेकिन वो क्या कह सकते हैं, नहीं रहना चाहती साथ। उनको अपना हिसाब है कि मैं गंगा नदी के किनारे रहूँगा, मरूंगा तो वहाँ जाऊँगा। अब उनकी है, और हमारा एक सोच है कि जब तक आँख चलता है, जब तक हाथ पैर चलता है, कुछ करते रहो करते रहो करते रहो। कोई साथ आता वेल एंड गुड, नहीं आता फिर भी कोई बात नहीं, है ना। एक मिशन तो होनी चाहिए, और अपने आप को यूजफुल सिटीजन बनाओ। यूजफुल सिटीजन का मतलब होता है कि केवल अपने फायदे के बारे में नहीं, समष्टि के फायदे के बारे में सोचो, निश्चित ही सब कुछ हो जाएगा। चलो मैं अपनी लाइफ की टैगलाइन को बनाता हूँ। अभी तत्काल मैं क्या करता हूँ, एक क्लिनिक चलाता हूँ, है ना। मोदी केयर को ज्वाइन कर रखा है। उसके बाद वहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट है, और यहाँ पे तो मैं डॉक्टर हूँ। बच्चों को चलते फिरते स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूँ पार्क में। जिनको पढ़ाता हूँ पैसे नहीं लेता, है ना। ये वर्तमान का ये है। उसके बाद एक सपना है। कैसा सपना है मैं से आपको बता दे रहा हूँ। हिंदुस्तान को लेकर के हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। यह मेरे सपनों का भारत है।
और मैं लोगों से अपील करता हूँ वह है जो खरपतवार नेता है उनको आप हटाओ, चाहे जैसे भी हटाओ। और पार्क के लिए भी मैं लोगों को अपील करता हूँ उसी को लाओ जो आपके पार्क को ठीक करता है। पार्क क्या उत्तम नगर इस गंदा नगर को साफ करना चाहते हो तो वो जो गंदे सोच वाले जो नेता उनको एकदम हटा दो, और नहीं हटाओगे तो फिर आपको गंदगी में रहना पड़ेगा। क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना आपने देखा था क्या? मैं किसी का नाम नहीं बोलता हूँ, वो जो अयासी की जिंदगी जीता है, अपने बड़े आराम में रहता है, लेकिन कभी उसने सोचा है कि आपके गली मोहल्ले में जब गुजरते हो तो आँख नाक में बदबू जाता है। कल भी किसी ने कहा था वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन साथ में किसी लाइन ने एक लाइन और भी जोड़ दिया था, वन नेशन वन करप्शन। ये दो लाइन बताता है हिंदुस्तान की सिचुएशन को, है ना। इससे अधिक बोलने की जरूरत नहीं है, और सब देशों से न्यारा है, भारत देश हमारा है। लेकिन भाई मेरे, वो तो ठीक है, लेकिन क्या यह जो मैं बोल रहा हूँ 100% ठीक है क्या? नहीं। आज समय आ गया है आबादी के हिसाब से खादी को चुन चुन के रखो और हटाओ। कोई जरूरी नहीं कि जो बार बार आ रहा है, बार बार लोगों को पटाक्षेप कर रहा है, आरोप लगा रहा है, वैसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।